Hello everyone, welcome to lecture number 3 of physics at Global Career Academy. Today we are going to discuss about the slope and the line equation. If you remember our lecture number 2, then it was related with the average speed. Our next topic in the physics is instantaneous velocity, and to understand this instantaneous velocity a concept from maths is needed. So today we are going to discuss a bit about the maths. Those who are planning to opt biology as subject कि जिनको 11th और 12th में मैथ्स नहीं आने वाला है, so for them this lecture is very useful. So let us start with the equation of line that you might have studied in your previous standards. So uh, what we have understood is y is equals to mx plus c. Okay, by using this equation you can represent any straight line, right? So what was y was the coordinate. Similarly x is also coordinate. C is a constant. Okay, c is constant, and m, that is known as the slope. Okay, so if I'll draw a line over here, let us say एक line हम यहाँ पे draw कर रहे हैं, and another line is like this, and one more line is there which is like this. Okay, so if I'll ask you what is the difference between all this. Okay, so one may be the length of the line, right? Length of the line. Second things which comes into your mind is its orientation. Orientation, that means you can see that this is vertical line. Okay, this is horizontal line. Okay, and you can say that it is having some angle, or say it is slightly inclined, right? Okay, so how can we have a difference between all these three in a mathematical way, that we are going to understand. So ये जो कितना स्लांट है वो हमें मालूम पड़ता है किसी भी लाइन के स्लोप से. एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्लोप. ओके, तो उसके लिए क्या मेथड है, या फिर कैसे हमें वो लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना होता है. सो विल टेक वन एग्जांपल फॉर इट एंड एवरीथिंग गेट्स क्लियर, राइट? सो let us consider that we have a line over here. लाइन है ओ पी जो ब्लू में दिखा है अभी, सिर्फ उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है हमें. ओके, देर इज अ लाइन ओ पी. सो वी हैव टू इमेजिन दिस लाइन इनटू अ प्लेन. एक्स वाई प्लेन में हम इसको इमेजिन कर रहे हैं. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव सेंटीमीटर स्केल. सेम वे ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो वी हैव सेंटीमीटर स्केल, and there is a line which is situated like this. OP is its orientation. यहाँ OP is the line, right? So if I want to find out the slope for this line, then what I have to do? See, I have to use the equation m. What is m? M is the slope of the line. Okay, so m can be given as y2 minus y1 minus x2, y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? This is the equation which is to be used to find out the slope of any straight line, right? So now question is, what is y1, what is x1, what is y2, and what is x2? So y1 and x1, so these are the coordinates corresponding to each other. So if I'll mark that के यहाँ पे at this point, suppose ये point है, origin है. Okay, at this point what is the value of x1? Or I'll say that at origin the value of x1 is 0, right? Okay, and what is the corresponding value at y axis? Y axis पे भी हमें वही value मिलेगी, so it is 0. Now if I'll ask you that what is the value of x2, I'll say that x2 and its value is 2. You can see that over here x2 is 2. Okay, at that time what is its corresponding value at
let us say it is approximately, I'll take it as 4 for ease of calculation. Okay, so I'll take it as 4. So let us say over here it is 4. So what I have to write over here is when the x2 is 2 centimeter, at that time y2 is 4 centimeter, right? 4 centimeter. So I can say that now I have 4 different values for 2 points. Okay, एक O point के coordinates है हमारे पास, P points के coordinates है, and from that I can easily find out the value of M. So now M can be given as value of y2 is 4 centimeter, value of y1 is 0 centimeter, and value of x2 is 2 centimeter, and value of x1 is 0. And that is how it is 4 by 2, and the value which comes is m equals to 2. Mind well, the slope is not having any unit. slope का कोई यूनिट नहीं होता है. ओके, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है. ऑब्वियसली यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 का जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा. ओके, यहाँ पे x2 माइनस x1 है, उसका जो यूनिट आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा. एंड दैट इज हाउ द सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड एंड द स्लोप इज यूनिटलेस. ओके, स्लोप है, उसकी वैल्यू है, वो एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी लाइन. So let us try for one more. Let us say we have line OQ. We have line OQ. Okay, and we are asked to find out its slope. Okay, so how can I find out? So again you have to take 2 points. Okay, आपको 2 points लेना है. सो इफ आई टेक, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि आप अगर लाइन है वो ओरिजिन में से ही पास हो रही है, लाइन है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, तो आप हमेशा उसको, ये वाले पॉइंट को हमेशा कंसिडर करो. यू डिक्लेयर इट एज द x1 एंड y1, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू है वो 0 होती है, तो इट गिव्स अस एज इन कैलकुलेशन, वो हमें ईजी पड़ता है, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू, x1 इज 0, at that time corresponding value of y1 is also 0 at origin. हम बात कर रहे हैं अभी रेड लाइन की, OQ लाइन की बात कर रहे हैं over here, and you can see that its value is 0, right? Now I'll take another value of this line. So let us take 8. Okay, यहाँ पे 8. So I can say that the value of x2 is suppose 8 centimeter. At that time corresponding value of y2 is 3, right? y2 is 3. So I will write that it is 3 centimeter, right? So again we have 2 points and corresponding value भी है हमारे पास. Okay, so again I will apply the equation of m. ये इक्वेशन हमें नहीं भूलना है किसी भी हालत में. m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस, ये हमें याद रहना चाहिए, राइट? सो m कैन बी गिवन एज 3 सेंटीमीटर माइनस y1 is 0 and x2 is 8 centimeter minus 0, and that is how my answer comes to 3 by 8, right? So here is the slope for the line OQ. Now if I'll consider one more line, okay, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, इट विल नॉट स्टार्ट विथ ओरिजिन. ओके, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो यहाँ पे 2 नंबर के स्केल से स्टार्ट हो रही है, एंड इट एंड्स एट समवेयर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम द लाइन. सो लेट अस से ये पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को हम बी बोल देते हैं. सो वी कैन से दैट लाइन नंबर ए बी is there and I want to find out the slope for it. Okay, then how can I find out its slope? So what you have to do in this case, again you have to mark 2 points. origin वाला point है, अगर origin में से लाइन का कोई भी एक कोऑर्डिनेट पास होता है तो you should always consider it. Again it gives ease of calculation. तो if I'll say that point A की बात करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ओके, so you can say that the value of x for point A is 0, right? So I will say that its x1 value is 0,
corresponding y1 is having value which is equals to 2, right? सेम वे इफ आई विल पुट अ स्केल, आप ये कहीं पे भी ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं 6 पे फाइंड आउट कर रहा हूँ दूसरा वाला पॉइंट. ओके, सो आई विल डू इट फॉर दिस पॉइंट एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर इट इज सपोज 5. ओके, यहाँ पे ये 5 है. सो ये 6 है, दैट विल बी माई x2, that is equals to 6 centimeter, and corresponding y2 is 5 centimeter. So I will write that it is 5 centimeter, right? So again you do the same thing, आप m ढूंढो. So y2 minus y1, so 5 minus 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x2 minus x1, so that is 6 minus 0 होगा. 5 minus 2, that is equals to 3, this will be 6, and this will be 1 by 2, या फिर आप लिखो 0.5. okay, so this is the line which is having slope of m equals to 0.5. okay, so I hope you have understood it, and try to practice with some other lines. कोई भी arbitrary line आप draw कर दो ग्राफ पेपर पे, and then after you find it out. 2 या 3 बार आप practice करो, and do not forget this equation m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. okay, so thank you.